have a look at the top COVID updates in this particular segment. The national capital on Friday witnessed a slight decline in its daily COVID-19 tally. Now, Delhi recorded 813 cases in the last 24 hours, pushing the case load to 35,687. Now, this is according to the Health Department's latest bulletin. Now, the positivity rate in Delhi has climbed to 5.30% and the active cases have come down to 3,703. Now, when we talk about Mumbai, it has reported less than 1,000 cases yesterday, causing a 2% drop in the test positivity rate as well. The last 24 hours, the city has reported 978 fresh COVID-19 cases out of the 12,452 samples that have been tested positive. Now, there are 9,710 active patients in Mumbai, out of which 594 are taking treatment in hospitals and 66 patients are on oxygen support. Now, that is the update so far as Delhi and Mumbai is concerned. I have my colleague Sujata Dwivedi joining us from Maharashtra. Sujata, give us an update on the COVID-19 situation in Maharashtra. Now, what about the mask mandate and the sort of alertness and precautions that is being done? Well, yes, we see that Mumbai yesterday reported less than 1,000 cases, and this was after 5 days wherein Mumbai reported a less than 1,000 case, and Maharashtra overall recorded 3,274 cases, which is again it was there was a decline of 10% compared to the previous day of the cases that were recorded. And currently we see that the positivity rate in the state stands at 97%, and the recovery rate and the positivity rate has also dropped. So as of now, the situation is under control. The government is trying for the people that they follow the masks, the mandatory rules and the regulations that have been ruled out by the government. And also we see that 4 deaths were also recorded. So as of now, the government is trying their best to control the situation, and also it is being said that because of the high vaccine dosage and of course the high vaccine supplements that is being given to the people, and also if they wear masks on a regular basis, the situation can be brought under control. And also because of the rainy season, the situation needs to be brought under control by the people by them following the regulations, as well as wearing masks and avoid social gatherings. The government is trying, as of now, masks are not mandatory in the state as well as in the city. However, because the cases are now under control, that it might not be mandatory to wear masks all the time. Right. Let's stay with us, Sujata. Let's take a quick update from my colleague Manohar Kesri, who's joining us from Delhi at this point. Manohar जी, अभी दिल्ली में जो कोविड केसेस हैं वो कम हो चुके हैं, इसके बारे में और डिटेल्स दीजिए, और जो मास्क मैंडेट और वैक्सीनेशन है उसका भी स्टेटस दीजिए। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में फ्लाइट की मामले कम हुए हैं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट तकरीबन पहले दिन की अगर बात करें तो 5 से 7% के आसपास बना हुआ है। अगर बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में 5.2% जो है पॉजिटिविटी रेट है। हालांकि मामले को भी देश लगातार 2 से 1 तरह से अप डाउन काफी हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों की बात करें, लोगों में कहीं भी इस प्रकार के प्रोटोकॉल या सरकार की जो मैंडेट मास्क पहनना जरूरी है वो कहीं नजर नहीं आता। लोग पूरी तरह से दिल्ली वापस आ जाए, जहाँ उन्हें लगता है कि वो मास्क से थोड़ा सा भी डर है तो तुरंत मास्क पहन लेते, लेकिन उन्हें खुद सोचना पड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार लगातार ले सकती है। तमाम राज्यों को पत्र निश्चित की है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद के लोगों को समीक्षा बैठक कर चुके हैं, और जो 5 फोल्ड टेस्ट की है ट्रीटमेंट इन तमाम को लेकर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार सभी राज्यों को कह रही है कि जहाँ भी उन्हें लोकलाइज देंगे, जहाँ भी जरूरत है उस सर्विलांस को फोकस करें, वहाँ पर एक्शन लें। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है तो वैक्सीन को लेकर के सरकार लगातार जोर दे रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे। जो सेकेंड डोज का थर्ड बूस्टर डोज की बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे लगाएं, और बच्चों को लेकर क्योंकि बच्चों को लेकर के लगातार सरकार कह रही है। और उसके बाद जो लोग छूट चुके हैं लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर घर तक 2.8 की शुरुआत कर दी है, और घर घर जाकर के लोग वैक्सीन लगते हैं। जो लोग छूट चुके हैं वो
जल्द से जल्द वैक्सीन का डोज लगा ले, क्योंकि अब तकरीबन जो है तो मोस्टली अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट डोज तो तकरीबन 90 प्लस 94 प्लस लोगों को लग चुका है। सेकेंड डोज की की बात करें तो 70% से ज्यादा लोगों को लग चुका है। तो ऐसी स्थिति में जोर है कि जी वैक्सीन ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, लोग वैक्सीन लगाएं और साथ ही साथ प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि अगर हम देखें खास करके 5 राज्यों में केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मामले अभी 1-2 दिन में काफी कम आए हैं। सराइकी बहुत ज्यादा परिस्थिति नहीं देखने को मिला है, मामले कम आए हैं। तो ऐसे तमाम राज्यों को पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय से इसमें ये कहा गया है कि आप पूरी तरह से सर्विलांस पर नजर बनाएं, नॉन सिक्वेंसिंग, क्योंकि नॉन सिक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन की तो सब वेरिएंट है, उनके मामले ज्यादा देखने को मुंबई में मिले। तो ऐसी स्थिति में तमाम कोशिशें ध्यान रखी है। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. Let me open my colleague Yash Raju, who is joining us on the broadcast. Yash, now tracking Karnataka and Tamil Nadu for us. Now give us details on the COVID situation in these states, and what about the mask mandate and the precautions that are being taken? Well, definitely, as you're clearly mentioning, we have been seeing the number of COVID cases have been increasing in the state from the past few days. But one more happy thing is that the number of deaths have also been reduced. So now, from the past couple of days, 0 deaths have been reported in the state now. So on one side, the number of COVID cases have also been increasing, and the Tamil Nadu government also mentioned that they have been taking efficient steps to ensure that the social distancing and the mask protocol has been valid at multiple areas across Tamil Nadu. But fines have also been collected for the people who have been violating the COVID protocol which is given by the government. Right, Yash. Now, when we're talking about the hospitalization rate, how is that in Tamil Nadu and in Karnataka, and what is the situation there? This is very less in the Tamil Nadu state, but when we are looking on the bigger picture, we have been knowing that the deaths which have been reported are mainly from the people who are not taking their vaccination jabs. On one side, Okay. also the doctors have been clearly mentioning that the steps have been taken, efficient steps have been taken to ensure that the vaccinations have also been the mass spread given, and health ministers also mentioned that the mega vaccination camps are also being conducted. Right, Yash, stay with us. Let me open my colleague Sujata Dwivedi, who is still with us. Sujata, now how is the hospitalization rate like, and what about the vaccination percentage that is being done in Maharashtra as of now? Well, at this point in time, we see that the vaccination percentage has increased, wherein people have been taking their doses as well as their booster dose, and also the hospitalization rate has decreased. Mostly the infections that are detected, they are asymptomatic, which is why we see that the virus is being cured by isolation at home with proper medication. And as of now, when talking to doctors, they have to see that they have to say that the next 2 to 3 weeks will be crucial to see that what next turns into the situation, wherein they have to say that there can be a spike if the norms are not followed well, which is why by the officials as well as from the state health department officials, they have to say that people at this point in time, they have to wear their mask to avoid getting positive, as well as to avoid the spike that can be seen, because now we see that there has been a downward trend in Mumbai in terms of the COVID-19 cases that are recorded, wherein there has been a slight decrease in the positive ratio, as well as we see that as of now it is being cured. So if this is followed well, the cases can decrease, which can lead, of course, to a higher recovery rate, and which is why people have been asked to wear masks for mandatoriness, and also the hospitalization rate as of now has decreased to a much lower level. Right. Thank you, Sujata, for joining us. Let me open my colleague Manohar, who is joining us from Delhi. Manohar ji, अभी जो दिल्ली में hospitalization rate है और vaccination rate है, उसके बारे में details दीजिए. अगर एक्टिव केसेस की संख्या अगर हम 4 महीने की बात करें जहाँ तक सीनियर सिटीजन का सवाल का सवाल है, ये काफी नहीं के बराबर है, नाकाफी है। तो ऐसे स्थिति में कहा जाए कि जो लगातार सरकार का ध्यान है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, इस प्रकार मेन फोकस है। जहाँ तक मैंडेटरी है, प्रोटोकॉल को लेकर के, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल को लेकर के, इसके
लोग जो है दिल्लीवासी अब देखने को ये मिल रहा है कि वो लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं। इसका नतीजा है कि अगर आप देखिए एक स्टेट की आप बात करें तो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आए और जो एवरेज है, एवरेज अगर हम 15 दिन की बात करें तो 1800 से लेकर के 1000 तक ये संख्या रोजाना 24 घंटे के अंदर आ रही है। जी, और मनोहर, क्या अभी जो क्राउडिंग है प्लेसेस में, क्या वो कंट्रोल किया जा रहा है? ठीक है, अब ऐसा कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा और न ही कोई एजेंसियां इसके खिलाफ चालान काटते हुए नजर आ रही है। क्योंकि हम अगर दिल्ली में देखें तो जब सेकेंड वेव और थर्ड वेव थी उस दौरान तो एजेंसियां दिखती रही थी और सिविल डिफेंस के लोग भी कुछ ऐसे ट्रैफिक की चालान काटते थे मास्क को लेकर के, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोग ज्यादा लापरवाह हो गए। इसी का नतीजा है कि अब मामले धीरे धीरे लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। मनोहर जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? अभी जो 1000 के नीचे जो आया है केसेस, क्या हेल्थ एक्सपर्ट्स सोच रहे हैं कि इससे भी नीचे जा सकता है या फिर एक फोर्थ वेव क्या का बातचीत चल रहा है? जी जी, ओके। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.